So hi guys, welcome back to another video of the series 15 OAQs. तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था 16 videos will be there and in every video we will be covering each and every aspect of OLQs. और उसी वीडियो का और उसी सीरीज का आज पहला वीडियो है रिगार्डिंग इफेक्टिव इंटेलिजेंस. The first factor of again the first OLQ of factor 1, that is planning and organizing in SSB. As I already said you, the assessors assess you on the basis of 15 OLQs. यही 15 क्वालिटीज है ऑन विच दे विल असेस यू. अब इसमें बहुत लोगों को रहता है रॉ जाना है, रियल जाना है, वो सब आपकी मर्जी है. आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज एंड इन दिस सीरीज आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी OLQs टू यू. इसके बाद इट इज अप टू यू, आप कैसे जाते हो, रिफाइन होके जाते हो, रियल रह के ही हर बार जा रहे हो, कोचिंग लेके जाते हो कि जैसे भी जाते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. बेसिकली बात करें, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, identify real problems, use available resource intelligently and arrive at a workable solution. सिंपली समझाता हूं, इट इज टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले आपको क्या प्रॉब्लम दिया गया है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. उसके प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में सोचो, नॉट जस्ट द अप्रोच. दिस प्रैक्टिकल वर्ड्स मीन्स अ लॉट. तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में समझो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अच्छे से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, जो रिसोर्सेस है उसको पर्टिकुलरली यूज करो इंटेलिजेंटली एंड वर्क ऑन द सॉल्यूशन और वर्केबल सॉल्यूशन. जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, वर्क ऑन दैट. इन एसएसबी इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट बीइंग अ टॉपर. टॉपर बहुत लोग हो सकते हैं, 99, 98, 97, IIT बहुत लोग आते हैं, बट दे डोंट गेट सिलेक्टेड. द वन हु आर गेटिंग सिलेक्टेड इज हैविंग द क्वालिटी इफेक्टिव इंटेलिजेंस. एक होता है रट्टू पोपट, जिन्हें बोलते हैं रट के, हर चीज रट के चले जाते हैं. They will not be making it to the SSB. It is the practicality that you should have, or knowing the maximum number of facts, all about using whatever knowledge and mentally ability that poses effective in real life situations. डिफरेंस समझ जाओ. आई नो द आंसर एंड आई कैन यूज व्हाट आई नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आई नो द आंसर मतलब वो रट के आ चुका है उस चीज को, और जो यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दैट इज व्हाट इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज. आगे बात करते हैं, वेयर डज इफेक्टिव इंटेलिजेंस फिट इन OLQs. 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होते हैं, 4 फैक्टर में डिवाइडेड होते हैं. दिस आर दिस. फैक्टर 1 होता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड डायनामिक. तो जो फैक्टर 1 का सबसे पहला OLQ है, दैट इज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस. बाकी OLQ के बारे में बात कर ही ली थी हमने, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लाइवलीनेस, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना. What exactly is effective intelligence? A simple definition as per, अगर SSB preparation पे बात करें तो again I have already given you, understand the situation correctly, apply one's knowledge or experience and available resource to find the practical solution. So an intelligent person isn't necessarily someone who knows everything. He just know what he have read about. An effective intelligent person knows how to use what you know, how to use what he knows to the given problem. अब अगर ये फ्लो चार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व सेवरल मेंटल प्रोसेसेस दैट आर ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एनालिसिस, यूजिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूशन. यहां तक ना, ये हाँ 1 2 3 4 5 6 is the till the 6th the process is simple to identify and it mentally poses the thing that you are having. अब एग्जीक्यूशन वाला फेज comes here when you work on that according to your thinking. Effective intelligence is not just about knowing, it is more about the knowledge you use wisely and practically. Intelligence versus effective intelligence. Again, ordinary क्या है, I know that vehicle needs fuel to run. अब इसमें अगर effectively बात करें तो पहले प्रॉब्लम कंफर्म करता है, then he checks the nearby fuel pump, then arrange the availability according to the resource and take the alternate means towards wherever he was going. सिंपल एक सोल्यूशन लिया था जहां पे आपके गाड़ी का तेल खत्म हो गया था, अकॉर्डिंगली इसने बस इसे पता है कि इसे तो बस डालना है, बस इसे पता है वो कैसे करना है. सी व्हाट एंड हाउ, व्हाट इज योर इंटेलिजेंस एंड हाउ इज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस. सिंपल एंड वेरी क्लियर. Effective intelligence is not that of same of IQ. A candidate may have excellent academic marks, high IQ, strong memory or extensive general knowledge and still struggling with practical problems. Practicality में इस बंदे को बैठा दो जो रट के आया है, या उसके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, वो फिर फंस जाएगा उस चीज में. But when I comes to an effective intelligence person, understanding the situation very quickly or very finely, he identifies the priorities what actually are required, finding practical solutions on the basis of the given problem, using of the resources and adapting
अडेप्टिंग टू द सिचुएशंस, ये अडेप्ट नहीं कर पाएगा, इसने जो किया है उसी चीज में आगे बढ़ पाएगा, बट इसने जो किया रहेगा उसके थ्रू ये चीजों में अडेप्ट भी कर सकता है. That is what effective intelligence is. So simply academic excellence is not equal to effective intelligence. Average academic performance is equal to lacking effective intelligence. ठीक है. Core components की बात करते हैं तो पहला आपका है सबसे पहला observation. What actually observation is? You saw a person lying. अब ये तो चलो, ये तो कोई भी नहीं सोचेगा as if you are a repeater or a good candidate. You will always think on this approach. Why is this person lying? What happened? You will check him basically. चेक करोगे पीछे से, यू कैन सी अ कार इज कमिंग, सो दिस इज योर रिसोर्स. यू स्टॉप दिस कार, गिव हिम द बेसिक फर्स्ट एड, वाटर बॉटल इज देयर, पानी पिलाओगे, स्प्रिंकल करोगे, कार को लेके हॉस्पिटल जाओगे. दैट इज व्हाट इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज सेकंड थिंग. अब यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सी सपोज अ विलेज इज फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंसिंग वाटर शॉर्टेज. Bring more water is what and person will think, but the effective intelligence over here plays how will you bring more water. वही चीज यहां पे रखा हुआ है. यू विल फाइंड द वे, लाइक फर्स्टली व्हाई leakage, insufficient supply, poor storage, groundwater depletion and seasonal variations are some of the aspects which you will be taking care of when you will be planning things out, and then you will think bringing of more waters according to this particular situations. Then with the underlying issues you will be solving out this problem, like leakage is there, you will be solving that. Insufficient supply, you will be connecting with the government. Then storage, about building a tank. Then groundwater depletion, you will be helping in them in this aspect again. Then seasonal variations, and lastly water shortage. Symptoms is not equal to root cause. Then practicality matters a lot. Let's say you are having 5 people, 1 vehicle, limited time and a medical emergency and broken bridge. You cannot arrange more than this vehicle. जो आपके पास दिया है आप उसको लेके चलो. Assuming 10 vehicle will immediately tell you that you are a person who always requires ease. Ease चाहिए आपको, इसीलिए आपने इतना कर लिया. नहीं, you have to work on this problem. If a bridge is broken and you are having 1 vehicle, how can you transfer this person to a single aspect to another, to the hospital? Bridge टूटा है ना यार, इस तरफ नहीं हो सकता क्या हॉस्पिटल? Why can't you take him to this direction? थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो और फिर आगे चलो. रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, ह्यूमन, मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड टाइम. अगेन दिस इन एस्पेक्ट ऑफ जीपी. जीपी का यही एस्पेक्ट है. अब प्रायोरिटाइज कैसे करोगे आप चीजों को? सबसे पहले अगेन जीपी, अगर ये जीपी के एस्पेक्ट में मैं समझ आता हूं आपको. सबसे पहला ऑलवेज एन इंजर्ड पर्सन. सेकेंड, व्हीकल नहीं होनी, हाँ व्हीकल टूटी है वो हो सकता है, या फिर नहीं, यहाँ आएगा, सॉरी दिस इज अ बिट रॉन्ग. पहला आपका इंजर्ड पर्सन होगा, सेकंड आपका ये होगा, थर्ड आपका व्हीकल ब्रेकिंग डाउन है, और मीटिंग उसके बाद आपका फोर्थ प्रायोरिटी है. मीटिंग हो सकती है बट इंजर्ड पर्सन विल ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना. देन अडेप्टिंग टू द प्रॉब्लम और अडेप्टेबिलिटी टू द प्रॉब्लम. अ प्लान में फेल. इफेक्टिव इंटेलिजेंस मींस यू डोंट बिकम मेंटली स्टक. अगर प्लान ए फेल होता है, यू वर्क ऑन प्लान बी. ऑलवेज देयर शुड बी अ प्लान बी अगेन टू योर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, to the aspect of the problems. तभी आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बार बार पूछता है what if not armed forces, that will check your effective intelligence. The plan has failed, then you will be finding out why actually the plan has failed. Reevaluate yourself and work back on that aspect. इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं इन एसएसबी टेस्टिंग फेज. तो सबसे पहले आ जाओ अपने साइकोलॉजी के पार्ट में. सो टीएटी की बात करते हैं. द प्रोटैगनिस्ट शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टेक रियलिस्टिक एक्शन एंड अचीव द लॉजिकल रिजल्ट. एसआरटी की बात करेंगे इन प्रैक्टिकलिटी, प्रायोरिटाइजिंग द थिंग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड एक्शन ऑन द पर्टिकुलर situation whatsoever is given to you. WAT की बात करें तो spontaneous response can reflect how the naturally a person, problem and actions outcomes are taken care of. Discipline, leadership, challenges, success and responsibility are some words you can practice on them. Again a very fine. SDT की बात करें तो SDT is all about you, wrong, others aspect. अब इसमें आप लिखते हो you take care of your family and whatsoever thing you do, but they want to know how, what are the activities you do together with them. एक दो एग्जांपल दोगे तो that will reflect your effective intelligence. GTO की बात करते हैं. GP में again it is all on the effective intelligence, how you are allocating everything you are writing, your speed of decision making, and various number of OLQs are there in this. PGT, SGT again how you are using this balli, then fata, then rope, tying and all things, objective, rule, available materials and physical constraints. Command task में again when I talk on the aspect of command task, understanding the obstacle, analyzing possibilities, giving appropriate instructions, and finally letting with your subordinate solving the problem.
ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, हाउ हैव अ प्रॉब्लम इन कॉलेज, व्हाट डू हैव यू डिड। अब यहाँ पे बात करते हैं लेट यू हैव लाइक क्या बात करते हैं, योर टीम इज इन कंप्लीटिंग इट्स वर्क, व्हाट विल यू डू, और योर व्हीकल इज ब्रेकिंग डाउन इन एन अनफेमिलियर प्लेस, व्हाट विल यू डू। अगेन दिस इज ऑल्सो एन एसआरटी, this is also an SRT, and this is also an SRT. This is simply to check your effective intelligence, and he will be checking out your responses on that aspect. और कॉन्फ्रेंस में भी यही चीज होती है, क्या पता उसने आपको एक SRT दी, उसका आपने रिस्पॉन्स दिया, उसने उस चीज को ब्रेक डाउन करके दूसरी उसी चीज में पूछी कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल व्हाट विल यू डू, अगेन द सेम थिंग। वो देखता है कब तक आप जाते रहते हो उस चीज में, तो दैट इज व्हाट द इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज। अब अपीयरेंस दैट विल शो दैट यू आर नॉट हैविंग दिस इफेक्टिव इंटेलिजेंस। पहला है ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सिंपल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सिंपल है उसको सिंपल लेके चलो, ज्यादा उसे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। अनरियलिस्टिक सोल्यूशंस आर अनदर एस्पेक्ट, रियलिस्टिक रह कर चलो, ऐसा नहीं हेलीकॉप्टर मंगा दिया, ये नहीं करना यार आपको इसे। फिर डोंट इग्नोर द कंस्ट्रेंट्स, तो आपको दिया है यू हैव टू सॉल्व दैट। देन एक्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, पहले चीजों को समझो, फर्स्ट गेट टू नो व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, फिर आप सॉल्व कर पाओगे। वेटिंग फॉर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा होता है ना कि यार ये तो हो गया बट इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, नहीं, वट एवर यू गॉट यू हैव टू थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट एफिशिएंटली, और उसके बाद सॉल्व करो। रिजिडिटी इज अनदर एस्पेक्ट विच एक्चुअली मेक यू लैक इन वेरियस नंबर ऑफ वैल्यूज। यू शुड बी अडेप्टेबल, नॉट अ रिजिड पर्सन। ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑथोरिटी, जैसे एम्बुलेंस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो आप एम्बुलेंस का इंतजार करो, नहीं यार देयर आर पास बाय व्हीकल्स, टेक हेल्प फ्रॉम देम। वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना, ये कॉन्फिडेंस तो आपको रखना पड़ेगा अपने में, बट ये ओवर मत आने देना, ओवर के बदले सेल्फ रख लेना वहां पे, ठीक है। अब वेरियस नंबर ऑफ एस्पेक्ट विच यू कैन डू टू इंक्रीज द इफेक्टिव इंटेलिजेंस। पहला है exercise problems daily, do one task and understand what happened, why did it happen, what resources did you have used for that, what are your options on that rather than the solution you have given, which option is most practical and what should you, where should you go wrong or where did you went wrong in this। GP practice karo daily, I will tell you practice 1 GP daily। फिर सिचुएशनल क्वेश्चंस करो, एसआरटीज करो सॉल्व, एसआरटीज उठाओ, जैसे कभी ट्रेन ब्लास्ट होगी क्या करना है, आपकी मम्मी को कुछ हो गया है क्या करना है, दवाई लेनी है क्या करना है, दैट विल एक्चुअली बूस्ट योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ऑलवेज गो विद वेरियस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम सही है, अगेन अ बेस्ट सॉल्यूशन, एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड इमरजेंसी सॉल्यूशन एस्पेक्ट में लेके चलो सारी चीजें। अब यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ सिंपल एंड एडवांस इफेक्टिव इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क में। सिंपल की बात करें तो यू कैन फॉलो OPAR। O मींस ऑब्जर्व, carefully observe the situation, P means prioritize, A means act and R means review। ऑब्जर्व करा, चीजें प्रायोरिटाइज करी, काम करा और बाद में रिव्यू करा क्या सही करा है नहीं करा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आता है तो इसके साथ जाओ SAPAR, सिचुएशन जो आपको दिया हुआ है उस सिचुएशन को आप अच्छे से एनालाइज करो, फिर उसमें प्रायोरिटाइज करो, फिर एक्ट करो और लास्ट में रिव्यू करो। बस एक सिचुएशन का जो एक एंगल है ना, सिचुएशन एंड एनालाइज का आप यही ले सकते हो, ऑब्जर्व इज ऑल्सो योर एनालाइजिंग। तो प्रायोरिटाइज करो, एक्ट करो और अडेप्ट करो। जीपी करो यार, जीपी जितना करोगे, एसआरटी जितना ज्यादा करोगे, दिस विल हेल्प यू आउट इन योर बिल्डिंग ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। कमांड टास्क अच्छा है, सिचुएशन है, फिर पीआई में सिचुएशनल क्वेश्चन आ सकते हैं, अगेन द एसआरटीज आर देयर आल्सो। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हाट विल मेक यू अ पर्सन व्हिच एक्चुअली रिक्वायर्स द इफेक्टिव इंटेलिजेंस वेरी फाइनली। अब इन पीआई में बात करते हैं, गिव प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल आंसर्स इन सीक्वेंस, अगेन अंडरस्टैंड, एनालाइज, प्रायोरिटाइज एंड सजेस्ट। जीटीओ में बात करें, अंडरस्टैंड द टास्क, एनालाइज कंस्ट्रेंट एंड suggest workable solutions, task understanding, constraints and workable solution। जीपी में अगेन द सेम थिंग, आप अपना सॉल्यूशन लिखो, ग्रुप के साथ अच्छे से फॉलो करो। एसआरटी में डायरेक्टली अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रिएक्ट टू दैट, रिएक्ट योर पर्टिकुलर एस्पेक्ट। टीएट में अच्छे खासे एक्शंस लिखो एंड दैट विल व्हाट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। Okay guys, that's all. That was all we were having in this video. We have covered the aspect of effective intelligence. Lastly, if you want to join our communities and the channels, the link are there in the description। ये जो PDF है, ये PDF भी आपको as in the community you will be getting it। WhatsApp पे we are having 2 channels, one for written and one for SSB, join कर सकते हो। Telegram पे currently we are not there, YouTube we are there, Discord पे भी तो फिलहाल हम लोग नहीं है। Join the channel। Also if you want to join our upcoming paid program, अभी हमारा 1st of September से start हो रहा है complete SSB guidance program, which will cost you ₹999 for a 30 days workshop। For that you can message us directly on this number and we will be happy to help you out in your preparation of your SSB। The next video of this series will be covering the aspect of reasoning ability and I hope the best and I hope that you like this video। Like करो, share करो and subscribe and also ask your doubts in the comment section। बाकी जय हिंद and take care guys।